मोहक मुस्कान, बातचीत का दिलकश अंदाज, सादगी के साथ क्यूट अदाएं, यह सब इस अभिनेत्री को और हसीन बनाती हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं उनकी, जो अपनी फिल्मों और अदाकारी से दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं और अब हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड में भी डेब्यू करने जा रही हैं। यह है सानवी, कार्तिका, गीता, लिल्ली, श्रीवल्ली और आफरीन। दरअसल ये अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के अलग अलग फिल्मों में निभाए किरदार हैं, जिन पर उनके फैंस ने बेशुमार प्यार बरसाया है। अपनी आगामी फिल्म गुड बाय के प्रमोशन के लिए जयपुर आई अभिनेत्री रश्मिका मंदाना मीडिया से मुखातिब हुई और अपनी फिल्म के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सॉरी, मुझे अभी पता चला कि मैं लेट आई हूँ, तो आई हैड 2 कॉलेजेस टू इवेंट अटेंड एंड उसके बाद एक इवेंट था, तो इसीलिए लेट आया। सो सॉरी दैट आई हैड लेट एंड यस, गुड बाय के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अक्टूबर 7 रिलीज होने वाला है, तो आप जरूर देखिए और मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं। रश्मिका, ये पहली आपकी डेब्यू फिल्म है, इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या कैरेक्टर है आपका। पहली स्ट्रेट हिंदी फिल्म है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ा था, पढ़ी थी एक्चुअली मैं कुछ चलेगा पक्का। मैं कुछ मिस्टेक किया तो प्लीज करेक्ट मी, ओके। तो जब मैं पढ़ी थी, मुझे ये बहुत ही इजी स्लाइस ऑफ लाइफ जैसे फिल्म लगा। तो मुझे मतलब इंट्रोडक्शन फिल्म, एक मास मसाला, जनरली दैट्स व्हाट वी डू ना। लेकिन मुझे जब व्हेन दे केम टू मी विद द स्क्रिप्ट, मुझे लगा कि ये नहीं छोड़ना है, मुझे यही करना है। और बच्चन सर के साथ ऑफ कोर्स एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो मैं बहुत ही खुश थी। एंड या कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चन साहब के साथ काम करके, बिग बी के साथ? बिग बी के साथ काम करके बहुत सीखा मैंने, सीखी मैंने। Oh God, ये स्त्रीलिंग पुलिंग है ना, बहुत ही हार्ड है। बहुत, of course, I've learned a lot, and he's so focused, and sir is so he's such a professional, and something which I've learned from him. Of course, बहुत ही है, तो I can't sit and describe the whole process, but I feel honor कि मैं ये फिल्म किया और मैं बहुत ही खुश हूँ। कविता बात आई है कि अमिताभ बच्चन तो कर रहे हैं संस्कारों की बात, और आप एक ऐसा रोल करें जिसमें संस्कार के विरुद्ध बात जा रही है। तो अक्सर किरदार क्या रहता है, जिस रोल को करते करते वैसा महसूस करने लगे, तो बिल्कुल आपके लिए एक विपरीत रोल था। तो इस विपरीत रोल के बाद आपके अंदर कोई ऐसा जनरेट हुआ कि संस्कारों के विरुद्ध जो बात थी इसमें बताई कि अमिताभ बच्चन ने? मतलब ऑफकोर्स ये फिल्म करने के वक्त में आई हैव तारा, ये कैरेक्टर है ना, बहुत ही अलग है। मैं मेरी कैरेक्टर बहुत ही अलग है, तो मुझे लगता था कि ये कैरेक्टर, हाउ डिड विकास सर इवन कम टू मी विद दिस कैरेक्टर, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन of course I'm an actor, I have to act, not like, you know, this is not my life, this is me as an actor. तो मैं how much ever I could, चैलेंज था, एक चैलेंज था ये। चैलेंज मतलब सीखा, लेकिन चैलेंज ये था कि ऑफ कोर्स डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट यू नो, आई डोंट नो, जस्ट अ डिफरेंट इंडस्ट्री। फर्स्ट फिल्म कर रही हूँ और अमिताभ सर के साथ कर रही हूँ, तो इट्स अ लॉट ऑफ, एट द फर्स्ट थिंग ओनली इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग। तो ऑफ कोर्स सर वाज वेरी वार्म, ही वाज वेरी वेलकमिंग। तो सर मेरे साथ बहुत पेशेंटली ये ही इज परफॉर्म, सो आई एम वेरी हैप्पी। दक्षिण की टॉप हीरोइन है और एकदम बॉलीवुड के अंदर आपने फिल्म किया है, क्योंकि दक्षिण की आप तो बहुत सुपर मतलब फिल्म है, तो एकदम ये बॉलीवुड में आपने किया, तो कुछ आपको लगा होगा एक्सपीरियंस की कुछ बॉलीवुड और दक्षिण से थोड़ा डिफरेंसेस? कुछ नहीं था सर, मुझे लगता था कि ये बहुत ही, हर टीम डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना
you do a Bollywood film, you have South ka DOP, you know, again a Hindi director, but at the same time South ka actor. It's all mixed. So हमें ये we have made the differentiation कि ये हिंदी है तो बॉलीवुड है, ये तेलुगु है तो टॉलीवुड है, ऐसा हमें किया है. लेकिन इंडस्ट्री इनसाइड में देखा तो इट्स ऑल मिक्स्ड विद talents from everywhere in the country, you know. So I don't think there's a lot of difference. But there's difference, of course, in each of the set that I go to. कविता कविता Yes, ma'am. First of all, welcome to Jaipur. Thank you. I'm Kavita from First Reviews. Hi. So my question to you is, you spoke on how it was to shoot with Mr. Bachchan, but I really want to know what was your first experience when you met Mr. Bachchan? Oh, when I met Mr. Bachchan, so I was extremely intimidated because, of course, he's a living legend, and you get to work with a man like that. It wasn't like, oh yay, I'm going to the set and, you know, I'm going to get comfortable. It was initially like, I just wanted to talk to Sir, understand how Sir is, his persona and everything. And the first day I remember was 2 years back on my birthday. So that day I remember him wishing me happy birthday and staying back to cut a cake with me and all of that. So I realized that through the working experience, he is very warm as a person, and he, no matter who he's talking to in the set or anyone else from outside, the respect stays the same. So those are some things which, of course, I've learned from him through shooting with him. But yeah, that was my first experience with him. Another thing I would like to ask you, like we see a lot of on social media and all, that you are getting a hang of Hindi now, and when you interact with the fans also, you are like, they try to tell you to speak in Hindi. Yeah. So how has it been shooting for a Hindi film? Was it difficult? I think I find it easier to shoot in a Hindi film because whenever I get really conscious is when I fumble in my words and I overthink the words that I have to say. But of course now people have been gracious enough to be teaching me while I'm at it. But on set I find it very easy because of course you have your lines, you have actors, you know, rehearsing with you and everything. So I didn't really find it hard there. But I just, you know, I'm like a little conscious when I have to form sentences. Also, you started your career at a very young age. Yes, ma'am. So I just want to know, who was that actor or actress whom you really looked up to, or you were inspired by, that you wanted to be an actor? So the thing is, of course, when I debuted, I sort of like thought it was just going to be one experience and out. Because I didn't think I would be lasting in the industry for so long or being in the industry for so long, working here. But yeah, it sort of like happened, and inspiration, I can't really pick out a name because I know that each one's journey is very different as it is mine. I find it extremely unfair to sort of like pick a name to say, okay, this person was my inspiration. But I think somewhere I wanted to be the better version of myself as a person before I became an actor, and after I became an actor, I wanted to be a better actor. So I think I can just sort of like speak for myself while I'm, you know, here. And one Bollywood actor you would like to work with? Bollywood actor? Oh, there's a list that I'm manifesting. I can't take up names. Thank you. अनिल हेलो मैडम, जैसे ये ट्रेलर में दिख रहा है कि एक अमिताभ बच्चन और आपके बीच में एक मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल द्वंद्व चल रहा है, तो ये क्या पूरी फिल्म में देखने को मिलेगा? क्या है एक्चुअली, इसके बारे में बताएंगे आप कुछ? तो मेरी कैरेक्टर तारा ने इट्स हर जर्नी ऑफ रियलाइजिंग कि पहले ना सिनेमा फर्स्ट में तारा इज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. ये क्या क्यों करना है, मुझे पैर क्यों चुनना है, ये नाक में रुई क्यों है, ये सब क्वेश्चनिंग करती है. लेकिन with the film that you realize कि ये हर रीति रिवाज को एक साइंटिफिक रीजन होता है, एक साइकोलॉजिकल रीजनिंग होता है. तो ये फिल्म में शी सॉर्ट ऑफ लाइक शिफ्ट्स फ्रॉम क्यों टू ओके, मैं मानूंगी कि यही चीज है. यू नो, दिस इज हर जर्नी ऑफ रियलाइजिंग कि हमारा
जो वो रीति रिवाज होती है, it's all because of some reasoning, you know, it's just not come out of the blue. ये तारा का जर्नी है, you know, so in the story you'll get to see कि Tara from questioning she comes to a conclusion, you know, so you see the whole journey of her mental changes. Hello Rashmika, this is ma'am. Nishita from Raj Media Times. Firstly, I would give you good luck for the coming goodbye. Thank you. And the motive of me asking this question, the movie name is Goodbye, right? Yeah. So Goodbye is something which might is giving you the emotional learning from all the perspectives. What has been your personal learning from all this? Because the life is so totally from birth to death. Yeah. Well, what I've sort of like learned while shooting for the film is that every moment is special. If you love someone or if you genuinely care for someone, then make the effort of making a call to them and just hearing their voice, because you don't know what's going to happen tomorrow. Tomorrow we might not even be here, you know, but that last moment you at least have this experience and the moments in your mind कि okay, एक call किया और उनको उनका voice सुना मैंने. Have you gone through such experiences when you were shooting? Not while I was shooting, but of course I lost my grandmom a couple of years ago. But I remember that I sort of like, I was so caught up with my studies that I never really spoke to her properly, you know, and that I regretted. ये गुडबाय मैं बिफोर यू Now we'll take last question, please. गुडबाय पुराने रीति रिवाज को या आपकी जो नई आधुनिक सोच थी उसको गुडबाय, ये गुडबाय किसको? Goodbye is हम we generally believe कि goodbye मतलब अलविदा नहीं होता है. It's not like forever goodbye. Goodbye होता है कि हम फिर से मिलेंगे. You know, it's that wala goodbye, that in our life we are not really saying goodbye to anyone, but who have passed on, their life is not stopped. Their journey is continuing, but we just can't see it. ये story है कि goodbye की, that yeah, it's just like अभी if I say goodbye to someone, I don't say कि okay मैं कभी I'm never going to see you again. It means कि I'm going to see you again, so come back safe to us. So that is our goodbye. रश्मिका, आपके फिल्मों के साथ साथ आपके कैरेक्टर भी लोगों के जुबान पे चढ़े रहते हैं, चाहे कार्तिका हो, गीता हो, लिली हो, आपकी जो आफरीन है और श्रीवल्ली, तो क्या तारा भी वैसा मैजिक क्रिएट कर पाएगा? I hope so, sir. देखेंगे हम 7 अक्टूबर को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारी my well-wishers में मुझे ये character names में बुलाते हैं, क्योंकि because that means that you've created such impact, you know, with them, with that character. मुझे आज when people call me श्रीवल्ली, लिली और गीता और सामवी, I love it. I'm like okay, so it means I've done a good job. So 7th के बाद we'll understand. Thank you. Okay, thank you so much for your time. And now